So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss a very important topic, which is very much in the news. I hope you all are aware, and that is Axiom 4 mission. That is um, Captain Shubhanshu Shukla has actually gone to space. That is International Space Station, and that is why we are here for this topic. So let us begin. So am I audible, visible? Is everything fine? If everything is fine, please write yes in the comments. Is my voice clear? Okay. So basically, before knowing it, let's learn some previous videos which we had discussed. एक मिशन ये वाला है, ठीक है, एक देख लीजिएगा आप. All about ISRO career launcher search करना, you will get this. Okay. And even more important is this one. आप ऐसे search करोगे, you will get this video. Okay. Why I'm discussing it? Here I have discussed a lot of PYQs. Like जैसे exam में आया था 2-3 years back Apple. So Apple was launched, first communication satellite launched from Kourou, French Guiana. This was asked. And then related to that, there are a lot of topics which can be asked even again. So ये वाली class जरूर देख लीजिएगा. Please watch it. This is very important. I'm star marking it. मैं ये believe कर रहा हूँ. I believe that after the class is over, you will watch it and make notes out of it. ठीक है. If you have time, you can watch this one also. But I would suggest this is more important. ठीक है, जरूर देख लीजिएगा. Notes बना लीजिएगा इससे. Okay. Now, and I'm believing that you have watched it. That's why things which I have taught here, I will not be teaching here. Okay. Although even this is important, even there are things which I have taught here. These are important. Please watch it. Hai? Let us begin with the first question, and I think you all should be answering it. But again, I'm saying you, please write in the comment. What is the name of the mission under which Shubhanshu Shukla from India has gone into space? Please tell me. And he is from which state? Which city? He was born in which city? Because these types of questions can also be asked, right? So the name of the mission is Axiom 4, which is written on the thumbnail also. Yes, very good. And please tell me, Shubhanshu Shukla was born in which state? Which city? Right, Pranchi, Kushagra, Hari, you all are right. Axiom 4. He's from Uttar Pradesh. From where? Which city in Uttar Pradesh? Lucknow. ठीक है. So please remember it. अच्छा, एक चीज और पूछूंगा. I know you will be surprised why I'm asking it, but yes, this can also be asked. He's having some nickname also. What is the nickname? Yes, Aditi Singh, you were right. Lucknow, he was born. What is his nickname also? Because maybe they can ask questions from there also. If you see the PYQs of CLAT, they go in detail about the topic. So of course they can ask that. Shubha. Oh, you're applying the logic. Shubhanshu is the short nickname Shubha, but no, that's not the answer. Not Shubhu, not Shubharam. You all are applying the logic. I got it. You do not know the nickname, but you are trying. Okay, we will discuss that. So हम nickname पर आएंगे आज, ठीक है? Okay, we'll discuss the Wikipedia page also. So उसमें जो important चीजें हैं उनसे related, we'll discuss. Now, Shucks, very good, Aditi, great. His nickname is Shucks. Okay, let's move on. Where is the headquarter of Axiom Space? San Francisco, USA, Houston, USA, Miami, USA, Chicago, USA. नहीं, see, I'm asking headquarter of Axiom Space. देखो पहले एक चीज समझो. For example, if I say ISRO का headquarter कहाँ है? Where is the headquarter of ISRO? So what should be the answer? The answer would be Bengaluru or Bangalore, है ना? But this is not the place from where ISRO launches satellite. ISRO launches mostly satellites from Satish Dhawan Space Center, which is not even in Karnataka. It is an outside the state, है ना? Sriharikota Island, which is in Andhra Pradesh, right?
Now, when I'm saying the Axiom headquarters, so there's no guarantee that it would be in Florida. है ना? Yes, Houston, Texas. So B is the right answer. Houston is a city in Texas of USA. Okay, so B is the right answer. Yes. So Aditi Singh, you are right, and Kushagra Saxena, you are right. So let me show. देखो ये USA है ना. So here is Texas और यहाँ ह्यूस्टन है, ठीक है. एंड ये है फ्लोरिडा. फ्लोरिडा में मियामी सिटी है और सैन फ्रांसिस्को यहाँ पड़ेगा कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को. और एक और मैं बताया था शिकागो है, शिकागो इलिनॉय स्टेट है, उसमें पड़ता है शिकागो, इलिनॉय स्टेट. ठीक है. टेक्सास में यू विल फाइंड लाइक ह्यूस्टन. ठीक है. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. Okay, so the right answer is B. Yes, Axiom Space and headquartered in Houston, and it is founded in 2016, only 9 years ago. देख लो 9 साल में लोग कहाँ पहुंचा दी. So they are so fast ahead, है ना. तो इनके जो फाउंडर्स हैं, इनका नाम अगर चाहो तो एक दो बार पढ़ लेना. नहीं, शिकागो इलिनॉय में, नॉट मिशिगन. मिशिगन है ना. हाँ, नहीं, इलिनॉय में. ओके, ठीक है. तो ये आपको पढ़ लेना, फाउंडेड 2016. और इनके फाउंडर्स का नाम जस्ट रीड वंस और ट्वाइस. आई डोंट नो वेदर दे लास्ट फाउंडर और नॉट, बट तो भी एक दो बार पढ़ लीजिएगा ना. एंड द कंपनी flew a space flight in 2022. पर 2016 में एस्टैब्लिश हुए, 6 साल के अंदर, इन नेक्स्ट 6 years they did it. First commercially crewed private space flight they sent into International Space Station. And this Axiom 4 is the fourth one. Okay. So now let's move on to the next one. Please read the question carefully and then answer me. I'm not explaining the question. First read, answer me, then I will explain. But वो तो बात तारीफ करने के लायक है ना कि 2016 में you established and 2022 you sent your first mission in 6 years. Of course, this is appreciable, है ना. Yes, Pranshi Govil, Harsh Sharma, Hari, you all right. The right answer is all of the above. देखो, अभी तो मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि कहीं भी लिखा ना प्राइवेट, फर्स्ट कमर्शियली प्राइवेट स्पेस फ्लाइट लिखा हुआ है, अभी जस्ट मैंने अंडरलाइन किया था. So of course, this is a private space agency, so of course first would be the answer correct. Along with Shubhanshu Shukla, there are 3 other astronauts they are going, so that is also true. A और C तो पता है आपको. It is taking help of SpaceX and NASA. Yes, that's true. So the right answer is E is the right answer to this question. जो rocket है Falcon 9, that is of SpaceX, which is owned by which person? NASA is a US government space agency. And SpaceX जो है, it is owned by which person? हाँ, Falcon 9 is a very powerful rocket. है ना? Yes, yes. हाँ. तो हाँ, Elon Musk. ठीक है, good. So the right answer is option E. Yes, Kushagra, Aditi, Hari, you are right. है ना? तो आप देख सकते हो, Axiom 4 mission, it used a SpaceX Falcon 9 Block 5 rocket to place Crew Dragon Grace, जिस पे गए थे वो Crew Dragon Grace नाम था, into low Earth orbit, because of course International Space Station is in low Earth orbit. ठीक है. Okay, so it was operated by Axiom Space, but yes, you need help from SpaceX because you are sending the rocket, and that you are using the SpaceX and NASA. No? We are coming to that, Kushagra. I'll explain your point, your question. Okay, so it was lifted off from Kennedy Space Center, that is in Florida, at this time, 25th June 2025 at 6:31, and ये millisecond वगैरह भी सब कुछ लिख देता डिटेल. UTC मतलब ये होता है coordinated universal time होता है, and if you see the gap, so I was just checking just before the class, है ना. So you can see we are actually 5 hours 30 minutes ahead of coordinated universal time. Okay. Riva will come. I will explain what is docking process. Okay. We have done SpaceX mission. We have done a video on that, and I will explain you how to watch that video. Please watch this class till last. You will get all those answers. ठीक है. ड्रैगन क्रू का भी आंसर मिल जाएगा. बेसल कन्वेंशन. अच्छा मैं देखता हूँ कुशाग्रा. I will see.
If there is a scope, I will schedule the class about the space. Basel convention, ठीक है ना? Okay, fine. So first we are talking about Kennedy Space Center. पहले ये जान लेते हैं. तो ये कहाँ पर है? हाँ, yes, where is USA? So US में फ्लोरिडा स्टेट है और यहाँ पर है कैनेडी स्पेस सेंटर, है ना? केप कानावेरल कैनेडी स्पेस सेंटर, from where USA launches most of the satellites. Okay, ठीक है? Okay. Now, what are the Riva? We have discussed it. मैंने आपको बताया था ना, in the beginning of the class I showed you 2 videos. Please go and watch those videos. There you will get to know about that. Okay. Now, so Falcon 9 Block 5 is a partially reusable human rated 2-stage orbit, है ना? Partially reusable मतलब वापस भी लाया जा सकता है. Can be brought back, है ना? So that is why SpaceX. तो यही है आपको Falcon 9 ये रॉकेट है. This is the rocket on which it was launched. ठीक है? ओके, इसका पूरा नाम है Falcon 9 Block 5 कह सकते हो, बट Falcon 9 Block 5. ओके, सो टॉप में जाओगे, ये जो है ना, दिस इज नथिंग बट ये जो आई वाज सेइंग, जब पूछा था ना क्रू ड्रैगन ग्रेस, इसी के अंदर इंसान जाते हैं, ह्यूमंस विल बी गोइंग इनसाइड दैट. ठीक है, ग्रेस क्रू ड्रैगन. ओके, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हिस्सा. सो ह्यूमंस आर जस्ट गोइंग हियर. तो होता क्या है, सिर्फ यही होता है, बाकी जो रेस्ट होता है वो इंजन होता है या ऑयल होता है, इंजन या फ्यूल होता है. So only that much portion actually is supposed to go in the space, the main target. Okay, देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ये है, ठीक है. अब देख सकते हो क्रू ड्रैगन मतलब इसके अंदर क्रू बैठ के जाते हैं. एंड दिस इज आल्सो ऑपरेटेड बाय SpaceX, है ना. So it is making its maiden flight to International Space Station on Axiom formation. ठीक है, सो इसके अंदर ह्यूमंस विल गो. अब देखो इसका ऊपर से ढक्कन खुल जाता है ना, इट गेट्स ओपन. व्हाई? आई विल शो यू व्हाई. बिकॉज इट हैज टू गो एंड अटैच टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. दैट्स व्हाई the top lid or the flap has to be opened. ठीक है, ओके. अब देखो आप समझिए, इसके अंदर inside this is a crew dragon inside which all the 4 astronauts would be sitting, right? So that they can reach to the International Space Station. Now, so the other 3 astronauts in the Axiom Axiom 4 mission are from which country? US, Poland, Germany, US, Hungary, Poland. All of the 3 are from USA, UK, France, US. Riva, you watch the class till last, you will get to know all the problems. Stages of rocket, etc. मैं बताऊंगा कहाँ से देखना है, ठीक है. I'll discuss all those things. The other 3 astronauts in the Axiom 4 mission are from which country? Means one is Shubhanshu Shukla from India. What about the other 3? What should be the answer? Yes, Kushagra, you're right. US, Hungary and Poland. B is the right answer to this question. ठीक है, तो आप देख सकते हो these are the 4 persons. Peggy Watson from US, Shubhanshu Shukla from India. इनका नाम थोड़ा सा लंबा सा है, I don't know. Slavoj Uznansky from Poland and Tipur Kapu from Hungary. तो यहाँ पे देख सकते हो ये चारों नाम है. That's why I have made the zoomed version of this. ठीक है, so she is actually from US. आप देख सकते हो ये flag है. He is from India, है ना. He is actually from Poland and he is actually from Hungary. So these are the 4 personalities. एक बार इन चारों का नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है. ओके, एंड हिज रैंक इज पायलट. जैसे इनका नाम, ये कमांडर, इनको रैंक दिया गया, इनको पायलट रैंक दिया गया, इनको मिशन स्पेशलिस्ट कहा जा रहा है, इनको मिशन स्पेशलिस्ट. सो प्लीज रिमेंबर दिस, शुभांशु शुक्ला's designation is pilot. ठीक है, ओके. यस, लेट्स मूव ऑन फर्दर. And Shubhanshu Shukla is an Air Force officer, Indian Air Force officer of which rank? Wing commander, group captain, squadron leader, air commodore. IAF officer है, of which rank? It was asked in what? क्या चीज पूछा था मॉक में? ये पूछा था रैंक.
Yes, earlier he was wing commander, but last year he was promoted to group captain. So the answer is B. March 2024 में I think he was promoted. ठीक है. अच्छा मार्क में पूछा था. Oh great. So B is the right answer. ठीक है. That's why he's called as Captain Shubhanshu Shukla. अब देखो, these are Air Force rank. ये तो टॉप वाले 5 स्टार रैंक होते हैं और ईयरली किसी को मिलता है ना. तो ये वाला जो होते हैं ना, these are actually chief. तो चीफ्स आते हो यहाँ आते हैं, एयरफोर्स नेवी चीफ, आर्मी चीफ. तो ये वाला एयरफोर्स का है ना. So flying officer से he joined. Of course, when you qualify NDA exam, you join as flying officer, then flight lieutenant, squadron leader, wing commander. So he was till last year he was wing commander, but now he has been promoted to group captain. So that's why उनके नाम के आगे लिखा है Captain Shubhanshu Shukla, right? So he is actually currently at this position. Okay. So आप देख सकते हैं ना, group captain Shubhanshu Shukla is an Indian Air Force test pilot, engineer, and ISRO astronaut. He is first of the 4 astronauts who has flown to space in Indian human space. So basically he's saying Indian human space flight program. So basically this is, we are talking about Gaganyaan. This is our planned mission. Okay. Okay. So this is our planned mission that in future 4 people will be going into the space, and one of them will be Shubhanshu Shukla, of course, no doubt. He is currently on board to Axiom 4 mission, becoming the first Indian astronaut to visit International Space Station. Why? Because Rakesh Sharma had not gone to ISS. Because there was no ISS at that time. Okay. So Rakesh Sharma had gone in 1984 and there was no International Space Station. So he had gone to the space, orbiting, etc. That's what you should know. So technically, he is the first Indian to go into International Space Station and second Indian citizen to go into space. Yes. Now I have one question. I am saying that Shubhanshu Shukla is the second Indian citizen to go in space. But what about Sunita Williams and Kalpana Chawla? What about them? कोई बता सकता है? They had also gone to space. In fact, Kalpana Chawla, when he was in her second journey, he had met with an accident and he died somewhere around 2003-4. No, Kalpana Chawla, why didn't count? Why not to count? Yes, because they are US citizens. Kalpana Chawla, Sunita Williams were their original Indian origin people, right? But they are not Indian citizens. So Shubhanshu Shukla is an Indian Air Force officer. He's an Indian citizen. Okay. So technically, ISRO has sent him. है ना? तो इंडिया का फ्लैग लगा हुआ इसीलिए. In fact, ISRO has invested. Okay, yes. वही मैं बताना चाह रहा था. Yes, she is an Indian origin lady, right? हाँ, good. So आप देख सकते हैं 10 अक्टूबर 1985 लखनऊ में पैदाइश हुई. ये सब उनकी पढ़ाई है. ठीक है. ये हो गया. Time and space इतना है ना. That is what is. हाँ, ये पूछ सकते हैं शख्स. Nickname. Maybe they can ask this. Because जब CLAT में PYQ में they had asked about Ukraine के president का earlier profession, what was his previous profession? So he was previously a comedian. जब ये पूछ लिया तो ये भी पूछ सकते हैं. That okay, please tell me, Shubhanshu Shukla had gone to space. Captain Shubhanshu Shukla. What is his nickname? ठीक है. So shux, SHUX. ठीक है. So please remember it because of course they can ask this question as well. Let's move on. So his rank is group captain. Okay. And he was hired as a flying officer. मैंने आपको बताया कि when you qualify UPSC NDA exam for Air Force, the first post is flying officer, है ना? बहुत दिखाते हैं. सबसे पहले यहाँ से join करते हो आप. You join here and promoted like this. Now he's here. Okay, we are done with this. ये हो गया. शख्स इनका नाम है, nickname. And okay, went to Russia. He had gone to Russia. Yuri Gagarin cosmonaut training center है. अच्छा, cosmonaut किसको कहते हैं? What is the difference between cosmonaut and astronaut? इसमें फर्क क्या होता है? Anyone? डिफरेंस क्या है? लॉन्च का प्लेस 39 ये कहाँ लिखा हुआ है? डोंट नो, कुछ नहीं. हाँ, कॉस्मोनॉट जो है सोवियत यूनियन टर्म यूज करती है, एस्ट्रोनॉट यूएसए यूज करती है, बस सेम चीज है. ठीक है. दैट्स व्हाट यू शुड नो. Yes, Chancellor, very good. USSR astronaut, good. Point next, you're right. Now let's move on to International Space Station. What is correct about International Space Station, where Captain Shubhanshu Shukla and 3 others have gone? It is in low Earth orbit, launched in 1998. Axiom 4 astronauts have gone into ISS.
ऑल ऑफ द अबव। तो देखो थर्ड वाला तो ऐसे ही सही, अभी मैंने डिस्कस किया है ना। द राइट आंसर इज डी है ना। फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1998 में, एंड दैट इज व्हाई 1984 में व्हेन राकेश शर्मा हैड गॉन देयर वाज नो सच ISS है ना। So that is what you should know. Now let's move on to the next question and please read it. हाँ हाँ, लोअर ऑर्बिट इसका 400 किलोमीटर के आसपास है। लोअर ऑर्बिट 0 से 2000 किलोमीटर के आसपास होता है ना। सो इट इज इन द रेंज ऑफ लोअर ऑर्बिट। Which of the following agency is not involved in international space station? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो नॉट को गौर से पढ़ना है, ठीक है, बिकॉज नॉट अंडरलाइन किया हुआ एग्जाम में नहीं मिलेगा, आपको अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू रीड इट केयरफुली, ठीक है। रंशी प्लीज आंसर द ऑप्शन ABCD में आपको बताना है कौन सा वाला है। Which one is Chinese space agency? That you have to answer. Yes. Yes, Kushagra, right. आपने पहले B बताया फिर A बताया, but what is your opinion? A B. So people are getting confused. देखो ये वाला कनाडा का है, ये वाला चाइना का है ना, ये वाला जापान का है, ये वाला R से रॉसकॉस्मोस, R से रशिया का है। So now the answer would be B है ना। CNSA नहीं है, बाकी ये 5 है, ठीक है। NASA, Roscosmos, European Space Agency, JAXA and Canada. Okay, so there is no China. So the answer is B. And I know मैंने जानबूझ से CSA और CNSA एक साथ दिया था because I know कि people will get confused. A होगा कि B होगा, right? But it is B, and I've given you so that it is better that you should get confused here rather than in the exam. है ना, एग्जाम में नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए अब आप बना लोगे, है ना। तो यहाँ कंफ्यूज हो जाना ज्यादा अच्छा है rather एग्जाम में बैठ के कंफ्यूज होने से, ठीक है। So CSA is there, Canada, NASA, Roscosmos, ESA and JAXA, ठीक है। और CNSA चाइना का होता है ना, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, लेट्स मूव ऑन, है ना। तो यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आप देख सकते हो। अच्छा, चाइना के स्पेस स्टेशन का नाम क्या है बताओ तो। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और सिमिलर टू दैट, इसका नाम क्या है? नाम बताइए। तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है, पूरा लिख देते हैं, तियांगोंग स्पेस स्टेशन, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। हाँ जी, तो हम लोग क्या बोले थे, लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब ये अर्थ हुआ, ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, ओके, है ना, 400 किलोमीटर्स। अच्छा, आप बता सकते हो, कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ मच टाइम इट टेक्स टू रोटेट और रिवॉल्व अराउंड द अर्थ? पूरा अर्थ को घूमने में इसमें जैसे 400 किलोमीटर दूर है ना, तो इट इज इन लो अर्थ ऑर्बिट बिकॉज़ लो अर्थ ऑर्बिट इज 0 to 2000 किलोमीटर। हाँ, रफली अराउंड 90 मिनट्स, ठीक है। सो 15.5 ऑर्बिट, सो ऑलमोस्ट 16 सनसेट और 16 सनराइज देखने को मिलता है, पता है। जैसे आप एक दिन में एक बार सनराइज और एक बार सनसेट देखते हो ना, इफ यू आर ऑन अर्थ यू विल सी once a sunrise in the morning if you wake up on time and sunset once, है ना, but 16 times sunset and 16 times sunrise you will get to know in international space station. आपको समझ भी नहीं आएगा सोए कब आदमी कब जगेगा ना। so the entire you can say circadian rhythm gets disturbed. सर्काडियन रिदम समझते हो, मतलब स्लीप साइकिल जिसको कहते हैं ना। सो ऑफ कोर्स सर्काडियन रिदम पर 4-5 साल पहले ना, सर्काडियन रिदम, आई थिंक दिस इज द स्पेलिंग, प्लीज चेक इट, स्लीप साइकिल गेट्स डिस्टर्ब्ड, ठीक है। if any of your relative comes from USA or Canada you will realize that they start sleeping on the day, है ना, जेट लैग की वजह से, so their sleep cycle also gets disturbed, दिन में सोते रात में जगते बिकॉज़ उनका अलग चलता है ना, that's the problem. So of course वो थोड़ा इश्यूज होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वहां जाने में भी, ठीक है। It's not so easy that you reach to the International Space Station. It's a great achievement if someone has reached there, ठीक है। So ISS International Space Station के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा।
सो एस्टैब्लिश फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1998 में, ठीक है। यस, देखो ये एक्सियम स्पेस के यूट्यूब चैनल से ही मैंने निकाला है। सो अब देख सकते हो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की फोटो है ना, और इसे देख रहे हो, ये जाकर के डॉक हो गया, इट वेंट एंड डॉक्ड इट। डॉक मतलब होता है जाके अटैच हो जाना, डॉकिंग, स्पेस डॉकिंग, दैट्स कॉल्ड। ओके, सो द मिशन गोस एंड इट गोस एंड मीट्स, ऐसा कुछ। देखो ये है, दिस इज द क्रू ड्रैगन है ना, जिसके अंदर है ना क्रू ड्रैगन ग्रीस नाम था ना। सो इनसाइड इट actually 4 humans are there or 4 astronauts are there. They will go and just देखो ये है, these are some of the images, ये जाके इसमें अटैच होगा। This is called as docking, this process. ओके, ठीक है। ये धीरे धीरे मूव करते 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 देखो ये मूव कर रहा है, थोड़ा सा नजदीक आया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये वाला, ISS, ठीक है। और ये क्रू ड्रैगन है, ग्रेस क्रू ड्रैगन। ओके, फिर धीरे धीरे मूव करेगा, आया, अटैच हुआ, एकदम क्लोज आ गया, अब अटैच हो गया। अब नाउ देयर आर 4 पीपल हियर, अब ये इसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। दे विल गो इनसाइड दिस, ओके। तो ये देखो यहाँ पीछे गेट लगा हुआ है ना, उसी से आए लोग। सो दे गेम फ्रॉम दैट गेट एंड दीस आर द 4 पीपल देयर, है ना। देखो ना कुछ जूस पिलाया जा रहा, पता नहीं क्या कुछ है, समथिंग। एंड दीस आर अर्लियर, दीस आर ऑलरेडी देयर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको पता है, आई वाज रीडिंग अबाउट फॉर द पास्ट 20-25 years देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट 1 पर्सन देयर, हमेशा कोई ना कोई वहां होता है पहले से मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हो, हेयर इज फ्रॉम इंडिया, है ना, कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ओके, यस। तो अब उसमें रिसर्च क्या क्या करेंगे, मोस्टली जो होता है वो हड्डी बोन उनसे रिलेटेड रिसर्च होता है, स्केलेटन मसल डिग्रेडेशन की, ह्यूमन गो इनटू द स्पेस, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड्स, है ना। अब मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। So these are the things, myogenesis experiment will be done. So mostly the experiment is related with bones, bone density, how if you go there, what are how the body responds, etc., muscle loss, etc. Experiment 73, what is that? ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, read about that. Rakesh Sharma had gone into the space. देखो अब क्या होता है, since Shubhanshu Shukla is in the news, they will ask in the past because that is how CLAT behaves, है ना। वो करते क्या है, पुराने पास वाले मिशन में जाते हैं, वहां से सवाल पूछते हैं, ठीक है। सो राकेश शर्मा had gone into the space in which year? 1981, 84, 86, 91। तो पहले मैंने बताया था, he is saying like after 41 years going to space, so 1984, B is the right answer, during Indira Gandhi time. So at that time Indira Gandhi ji was the prime minister, so B is the right answer to this question, है ना। 3rd April 1948, 4, with the help of Soyuz. Soyuz is a Soviet mission, USSR. He is the first Indian to travel into space, है ना। That is what you should be knowing about, है ना। तो आप देख सकते हो उनके बारे में भी। पंजाब को पहले पेप्सू कहते थे, आपको पता है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन डोमिनियन ऑफ इंडिया, पेप्सू कहते थे। So that is what you should know. And he was also an IAF officer, Indian Air Force officer, and a rank wing commander. Okay, so that is what you should know. और कैसे बताने का है, 7 days 21 hours 43 minutes के लिए कहते हैं। उस टाइम पर स्क्वाड्रन लीडर थे, at that time he was a squadron leader, but later on he retired as wing commander. Okay, that's what he fought 1971 war also. He got Ashok Chakra from India, India's highest peacetime award, or hero of the Soviet Union, only Indian to get this award. ये भी important है, ठीक है। So these are the things you should be knowing. Yes, Krishi Sachdeva, that is what he had said, सारे जहां से अच्छा, right, good. हाँ, उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है। सो इन्होंने क्या चीज पे काम किया था, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट राकेश शर्मा, मिस्टर राकेश शर्मा। सो स्पेंड 7 days, है ना, 21 hours 40 minutes, बायोमेडिसिन, रिमोट सेंसिंग। व्हेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आस्क्ड कि हाउ इंडिया इज लुकिंग फ्रॉम स्पेस, सारे जहां से अच्छा, हिंदू से था हमारा, है ना, सारे जहां से अच्छा इज अ फेमस पोएटिक्स पोएम बाय अल्लामा इकबाल, है ना, मोहम्मद इकबाल। सो फ्रॉम हियर ही हैड सेड सारे जहां से अच्छा, है ना। Okay. And of course, there was a talk yesterday with Modi ji also when Captain Shubhanshu Shukla had gone to space. तो आप चाहो तो देख सकते हो YouTube चैनल पे जाके, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। He said sky is not the limit. और समझे, sky is not the limit मतलब क्या है, हम लोग बोलते हैं sky is the limit,
बट वो क्या बोल रहे हैं, स्काई इज नॉट द लिमिट, यानी उससे भी आगे आप जा सकते हो, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस कम्स अंडर मोदी जी, देयर इज नो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, देयर इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस अंडर पीएमओ, मिनिस्ट्री नहीं है, दिस इज अ डिपार्टमेंट विदाउट मिनिस्ट्री, ठीक है। सो टेक्निकली यू शुड सी यूज द वर्ड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, है ना, ठीक है। स्काई इज नॉट द लिमिट, मतलब ये हुआ कि मतलब ही इज टेलिंग, he wanted to convey that your destination should not be sky, it's beyond it, है ना, it should be beyond it, ओके। सो है ना, सो राकेश शर्मा के बारे में हम लोग कुछ और भी जाने थे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट राकेश शर्मा, है ना। सो उनको हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन अवार्ड मिला था, और इज द ओनली इंडियन टू हैव गिवन दिस अवार्ड, ठीक है। और अशोक चक्र इंडिया हाईएस्ट पीस टाइम अवार्ड है, गारंटी अवार्ड, है ना, पीस टाइम गारंटी अवार्ड हाईएस्ट, वो भी उनको दिया गया था। हाँ देखो, यही मैं बता रहा था ना, 16 सनसेट एंड 16 सनराइजेस, शुभांशु शुक्ला टू पीएम ऑन लाइफ ऑन आईएसएस, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज ऑलमोस्ट 93 मिनट्स के आसपास लगता है एक चक्कर लगाने में, वन रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, तो बार बार रिवॉल्व करेगा, तो ऑफ कोर्स, है ना। सो दीस थिंग्स विल हैपन ऑलमोस्ट अराउंड 90 मिनट्स, 16 सनसेट्स, 16 सनराइजेस, कब सोए आदमी कब जगह पता ही नहीं चलेगा, ओके, दैट इज व्हाट यू शुड नो। एंड यस, तो अब इन्होंने जवाब दिया, इनसे पूछा गया कैसा लगता है इंडिया लुक्स ग्रैंड फ्रॉम स्पेस, ठीक है, तो ये उन्होंने कहा इंडिया अपीयर्स ट्रूली ग्रैंड, तो उन्होंने जो वर्ड यूज किया वो ग्रैंड यूज किया है ना मोस्टली, और राकेश शर्मा ने कहा था सारे जहां से अच्छा, ठीक है। सो दीस आर सम ऑफ द वर्ड्स यू शुड नो। हाँ ये हो गया, ऊपर से भारत कैसा दिखता है, सारे जहां से अच्छा, ओके, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हो इसे, अच्छा सर्गाडियन रिदम से, हाँ फर्क ये पड़ता है ना कि देयर आर सो मेनी सनसेट सनराइज, ऑफ कोर्स स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। Yes, and ISRO has spent how much? 5 billion rupee. So लगभग समझ लो 500 करोड़ के आसपास, 500 करोड़ रुपीस, रुपी के टर्म्स में, ये 5 बिलियन रुपी है, डॉलर नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। कहीं कहीं लिखा है 548, 550 करोड़ रुपीस में, ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड नो। तो अगर इतना नहीं याद हो तो बस याद रखना 500 करोड़ के आसपास खर्च किया है, रफली 500 करोड़, ठीक है, and that's what you should know। and he had got this training, ये राकेश शर्मा को भी ये ट्रेनिंग मिली थी यूरी गागरिन सेंटर में, है ना, ओके अच्छा, ओके, प्लीज करेक्टेड, उस टाइम पर वो स्क्वाड्रन लीडर थे व्हेन राकेश शर्मा हैड गॉन, हाँ स्क्वाड्रन लीडर थे, हाँ ये तो मैंने बताया था। लेटर ऑन ही रिटायर्ड एज विंग कमांडर, रिटायर्ड एज विंग कमांडर, ठीक है, ये सभी पूछ सकते हैं। मुझे लगा 5 रुपये स्कोर के ट्रिक के लिए, नहीं, इट्स नॉट दैट, हाँ, इज बैकअप वाज रवीश मल्होत्रा, राइट, आर्गन, ठीक है। Who among the following was the first human to go into space? Now please answer this question, देखिए कितने लोग आंसर कर सकते हैं। नहीं इनका नहीं, रवीश मल्होत्रा वाज द बैकअप ऑफ वो राकेश शर्मा, दैट्स व्हाट। हाँ यूरी गागरिन, देखो ह्यूमन, फर्स्ट ह्यूमन इनटू स्पेस पूछा जा रहा है, अगर ऑन मून पूछा जाएगा देन ओनली नील आर्मस्ट्रांग होगा, ठीक है। यूरी गागरिन वाज फ्रॉम यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, ठीक है, इज द राइट आंसर, है ना, छोटी छोटी बातें बट आपको पता होना चाहिए। हाँ, एज ऑफ मार्च 2025 ह्यूमंस हैव नॉट ट्रैवल्ड बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट सिंस अपोलो 17, है ना। तो ये भी मैं बताता हूँ, जो मून की बात है वो अपोलो 11 वाज द फर्स्ट मिशन 1969 and they had landed on the moon. Neil Armstrong was the first person to land on the moon. This is what America has claimed or the NASA has claimed. Only country that has gone into the moon is actually USA, according to their claim. Okay. So Apollo 11. So there were 3 persons: Neil Armstrong, Michael Collins, and Edwin Aldrin. So these are the 3 persons. Okay. So ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज ये 1969 में अपोलो 11 गया था, and 1917 में अपोलो 17 के बाद this mission was closed. Since 1972 we have not seen America sending humans to moon. अब manned mission नहीं जाता है मून पर, सब now you will see after 1972 all the missions are unmanned or uncrewed, ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देख सकते हो
अपोलो 11, 12, 14, 15, 16, 17. अच्छा यहाँ पर अपोलो 13 कहाँ चला गया? कैन एनीवन टेल मी? एनीवन? First woman to go in space was Valentina Tereshkova, right? Yes, people have answered. Good. Prashant Nair was backup. एक मिनट में check कर लेता हूँ. Prashant Nair was backup of Shubhanshu Shukla. हाँ, backup, right? वो भी सही है. Prashant Nair was backup of Captain Shubhanshu Shukla. अब Apollo 11, 12, 13 गायब है, 14, 15, 16. हाँ, it is called a successful failure. Why? Failure because it could not achieve its target. Successful but because लोग बच गए थे. People survived. ठीक है. So it was a failed lunar mission. It's called a successful failure because the astronauts got safely returned. Okay. So that is what you should do. Why लंबी चौड़ी कहानी है, but है ना, there was something that the problem came, है ना, but fortunately they got survived. ठीक है. ये हो गया. Apollo 17 was the last one. 1972 उसके बाद लोगों ने मिशन बंद कर दिया. And only USA is the country which had gone into the moon. I mean, this is what they have claimed. And अच्छा हमें लगा अनलकी नंबर से हटा दिया. No, that's not the case. I mean, ये हो सकता है इसके बाद अनलकी माना जाने लगा हो. I don't know. So जो भी है. So that is what you should be knowing about. है ना? Or please read something about Gaganyaan because we have sent Captain Shubhanshu Shukla because he will come back and he will learn a lot of things. And again, we'll be sending. This will be purely done by ISRO. है ना? Gaganyaan mission. है ना? That will be launched from human rated launch vehicle M3. है ना? And these are the things you should know. And this is our plan. So शुरू के 3 uncrewed mission भेजे जाएंगे. Then the Gaganyaan 4 and 5 will be crewed mission. And that will be India's first crewed mission being sent by India. Artemis का status, I need to check it where they are right now. ठीक है. लो अर्थ ऑर्बिट विल बी सेंडिंग और इसमें कुछ और चीज जान लेना है ना. इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, दैट इज नथिंग बट गगनयान. ठीक है. सो यहाँ साइन किया गया था. इसमें वी हैव सेलेक्टेड 4 पीपल है ना. ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्ण नायक, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला. नाउ इज बीन प्रमोटेड टू ग्रुप कैप्टन आल्सो. ठीक है. तो इनको प्रमोट कर दिया गया. ठीक है. इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला and promoted to group captain in March 2024 last year. ठीक है. नहीं ऑर्बिट में जाएगा. As far as I could remember, it will not go to international space station. Gaganyaan will be hardly for 3-4 days and it will not go to international space station. That is what I could remember. कहीं लिखा होगा इसमें. So it will take no earlier than 2026. Will orbit the Earth at 500 kilometer altitude for up to 7 days with 2 or 3% crew on board. ठीक है. ठीक है ना. इसमें they are not writing that they will go in international space station. ठीक है. साखी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन डेवलप्ड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर. प्लीज रीड लिटिल बिट अबाउट दैट. और यस, ये इंपॉर्टेंट है. व्योमा मित्र, ये एक फीमेल लुकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया. दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमनॉइड रोबोट. मींस अ रोबोट व्हिच अपीयर्स लाइक अ ह्यूमन. And she will be also sent into the space before a crewed mission. पहले इनको ही भेजा जाएगा एक बार चेक करने के लिए. ठीक है. So flying humanoid etc. Now so she will perform microgravity experiments. So Vyama method 22 January 2022 को launch मतलब ये लाया गया था. I mean this was unveiled है ना. ठीक है. So आप देख सकते हो कितना सारा मिशन 2007 से ही सब ट्राई लिया जा रहा है. A lot of previous missions are being done. ठीक है. तो ये भी अब अनक्रूड मिशन होगा. 2023 में ये गया था. ये भी अनक्रूड था. Then these are many of the tests, uncrewed mission. So these are different tests being performed. ठीक है. फोर्थ ऑर्बिटल एटसेट्रा. अब हाँ, इसके बाद जो होगा ना क्रूड मिशन इसके नीचे से स्टार्ट होगा. हाँ, यहाँ से. So that is what 26-27 के आसपास से स्टार्ट होगा. ठीक है. 1 2 3 7. हाँ, इसमें से एक कैप्टन शुभांशु शुक्ला will be going because of course he has got the experience now. है ना. That is what the planned mission is. Okay. और इसमें और भी बहुत सारी चीज पास में हुई थी. 2014 वगैरह में ये सब टेस्ट किया गया था. But I don't think इतना डिटेल पूछेंगे. And they had done reusable re-entry experiment because you have to bring back the people also back.
तो स्प्लैश डाउन हुआ था बे ऑफ बंगाल में और टेस्ट किया गया था, है ना, बिकॉज व्हेन यू ब्रिंग बैक पीपल, जैसे आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स लैंडेड नियर समवेयर नियर, शी एक्चुअली स्प्लैश डाउन समवेयर नियर फ्लोरिडा, है ना। फिर एक पैट अबाउट टेस्ट होता है, थोड़ा सा इसका पढ़ लीजिएगा, प्लीज रीड लिटिल बिट अबाउट दैट, ओके, है ना। डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया अभी, डॉकिंग इंडिया का स्पेडएक्स डॉकिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसमें मैंने पूरा वीडियो बनाया है, where we have discussed कि if India is going to make Bharatiya Antariksh Station, which is similar to International Space Station, this docking would be very helpful. Space docking experiment, SpaceX. Please go and watch it. This is very very important. ये मैंने आपको बता दिया कि this will be important. And one more thing, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हमको stages of ये बता दीजिए, है ना, rockets etc. तो ये वाली क्लास देख लीजिएगा, watch this one and watch this one also. ठीक है, this is very very important. Here I have discussed many things related with ISRO which were previously asked in the exam and topics related with that. ठीक है, कि बच्चों के लिए all about Gaganyaan class लेंगे. Oh great, yes, we hope that yes by 2027 it will be successful. ठीक है. Okay, so this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.